Let's see the solution of this question. In this question, ask us so that the points a plus 5, a minus 4, a minus 2, a plus 3, a do not lie on a straight line for any value of a. It means that area formed by these points will not be zero. Then we say that the given points are do not lie in a straight line. So let's see the solution. A plus 5 and a minus 2, and this is the a, and a minus 4, a plus 3, and this is the a 1 1, and this is the 1. So applying here, R1 implies R1 minus R3, and R2 implies R2 minus R3. Therefore here will be determinant equal to, we write down here, 5 minus 2, and this is the a, this is the minus 4, and this is the 3, and this is the a. This one will be 0 0 and 1, and we write down here 1 by 2 here, 1 by 2. So here will be equal to 1 by 2, and we consider about this one. So here will be 15 minus 8 equal to 7 by 2. So from working it is clear that 7 by 2 not equal to 0. Therefore the given points do not lie on a straight line. Proved. So hope that there is no problem to understand the solution as well as the explanation of the solution of this question. If you have any doubt, write into the live chat box which is open to all of you. इस क्वेश्चन में बोलता है कि आपका 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोलता है कि इसमें सॉल्व कीजिए कि ये 3 पॉइंट्स जो है a प्लस 5, a माइनस 4, a माइनस 2, a प्लस 3, a एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करता है. तो इट मीन्स दैट यहाँ पर यदि इस पॉइंट से जो एरिया फाइंड आउट होगा या इस पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा उसका एरिया 0 नहीं होगा. अगर एरिया 0 होगा तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेगा. तो यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट्स दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट हम लोग एरिया इस तरह से निकाल लेते हैं, और फ्रॉम वर्किंग ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स जो है स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग नहीं करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आया. डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ 7/2 आ गया. तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. यदि हुआ है तो लाइव चैट बॉक्स
आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन वहां पर लिखिए। ऑन स्पॉट आई विल क्लियर योर डाउट। स्पॉट में ही, मैं मौके पर ही आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। Let's see the solution of this question. So that the triangle ABC is an isosceles triangle if the determinant is this one equal to 0. So let's see the solution of this question. So applying here, C1 implies C1 minus C2 and C2 implies C2 minus C3. Therefore the value of the determinant here will be 1 minus 1 equal to 0, and here will be cos A minus cos B, and here will be cos square A minus cos square B plus cos A minus cos B. Observe there is no problem to understand up to this step. C2 here will be 0, and here will be cos B minus cos C, and here will be cos square B minus cos square C plus cos B minus cos C, and third column here will be 1, and 1 plus cos C, and cos square C plus cos C, and equal to, we write down here 0. After there is no problem to understand up to this step. Now take cos A minus cos B common from C1, and cos B minus cos C common from C2. Therefore here will be determinant equal to, we write down here cos A minus cos B, and we write down here cos B minus cos C from C2, and we write down here 0, and here will be 1, and here will be 1 plus cos A plus cos B, 1 plus cos A plus cos B, and here will be 0, and here will be 1, and here will be 1 plus cos B plus cos C, and here will be 1, and 1 plus cos C, and cos square C plus cos C equal to, we write down here 0. After there is no problem to understand up to this step. So here next step will be determinant equal to cos A
minus cos b, and we write down here cos b minus cos c, and we consider about first row. So here will be 1, so we write down here 1, and when 1 multiplied by 1 plus cos b plus cos c, then we get here 1 plus cos b plus cos c, and 1 plus cos a plus cos b multiplied by 1, then we get here minus 1, and here will be minus cos a, and here will be minus cos b. After there is no problem to understand up to this step equal to 0. So here will be next step cos a minus cos b into cos b minus cos c, and we cancelled out 1 we cancelled out cos b, then we get here into cos c minus cos a equal to 0. Therefore here will be cos a minus cos b equal to 0, cos b minus cos c equal to 0, and cos c minus cos a equal to 0. Therefore cos a equal to cos b, and cos b equal to cos c, and cos c equal to cos a. Therefore here will be angle a equal to b, angle b equal to c, and angle c equal to a. So from working it is clear that it is clear that this is an isosceles triangle. Proved. So ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी जो है जिसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर इसके दो एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। अब जब किसी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो वह आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। सो hope that there is no problem to understand the solution as well as the explanation of the solution of this question. If you have any doubt, write into the live chat box. तो यदि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन के व्याख्या को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लाइव चैट बॉक्स में लिखिए, ऑन स्पॉट मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। Let's see the solution of question number 17. In this question, ask us find inverse A if matrix A is given, and also ask us show that inverse A equal to A square minus 3i by 2. This is very easy question. Let's see the solution of this question. To find the value of inverse A, we need the value of determinant of A. So determinant of A here will be minus 1 into minus 1 plus 1 into 1 equal to 2. We also need the value of adjoint of A because we know that inverse of A equal to
adjoint of A by determinant of A. So for the value of the adjoint of A, we need the value of cofactors of each element. So the cofactors of first row here will be A11 equal to -1 and A12 equal to 1 and A13 equal to 1 and A21 equal to 1, A21 equal to 1 and A22 equal to -1 and A23 equal to 1 and A31 equal to 1 and A32 equal to 1 and A33 equal to -1. So hope that there is no problem to understand up to this step. So we write down adjoint of A equal to, we write down the transpose of cofactors. So here will be, we write down here adjoint of A equal to -1, 1 and this is the 1, this is the 1, -1 and this is the 1 and this is the 1, 1 and this is the -1 and to the transpose. So this one will be transpose, it means that first row will be the first column. So we write down here -1, 1, 1 and second row will be the second column, therefore we write down here 1, -1 and this is the 1. Third row will be the third column, so we write down here 1, 1 and this is the -1. Hope that there is no problem to understand up to this step. Therefore the inverse of A equal to, we recall the formula 1 by 2 and adjoint of A, or this is the value of 2 is the determinant of A, or we write down here adjoint of A by determinant of A. So adjoint of A equal to this one, so we write down here 1 by 2 and we write down here adjoint of A, which is -1, 1, 1 and this is the 1, -1, 1 and this is the 1, 1 and -1. So this is the value of inverse of A. In this question ask us what is the value of inverse of A. So this is the answer of the first part of this question. Now we find out A square. So A square, it means that we write down 2 times matrix A. So A square equal to, here will be matrix A is 0, 1, 1 and this is the 1, 0 and this is the 1, this is the 1, 1 and this is the 0. Order of this matrix is 3 by 3. Again we write down this matrix which is 0, 1, 1, 1, 0, 1 and 1, 1 and this is the 0. Order of this matrix is also 3 by 3. So this matrix and this matrix is defined for the
multiplication. So the multiplication here will be equal to, we write down here, element of first row multiplied by the corresponding element of the first column. So here will be 2, here will be 1, here will be 1, here will be 1, here will be 2, and here will be 1, here will be 1, here will be 1, and here will be 2. So this is the value of a square. Hope that there is no problem to understand up to this step. Now we find out the value of 3i. So we write down here 3i equal to 3 into identity matrix. 3 into identity matrix. It means that 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, and 1. When each element multiplied by 3, then we get here 3i, which is 3, 0, 0, 0, 3, and this is the 0, 0, 0, and this is the 3. So we find out here a square minus 3i by 2 equal to, here will be, we write down here for these two, when 1 by 2, and we find out a square minus 3i. So the value of a square is here, and value of 3i is here. So 2 minus 3 will be what? Minus 1, and 1 minus 0 equal to 1. So we write down here 1, and 1 minus 0 equal to also 1, and again 1 minus 0 equal to 1, and 2 minus 3 equal to minus 1, and 1 minus 0 equal to 1, and here 1 minus 0 equal to 1, and here 1 minus 0 equal to 1, and here 2 minus 3 equal to minus 1. So if we put at a balance here, a square minus 3i by 2 is equal to the inverse of a. So we write down here inverse of a. This one is asked in the second part of this question. So this one is also proved. So hope that there is no problem to understand the solution of this question. If you have any doubt to understand the solution as well as the explanation of the solution of this question, then write into the live chat box, which is open to all of you. तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन में ए का इन्वर्स पूछा गया था और ए का इन्वर्स बराबर सॉल्व करने के लिए बोला था ए स्क्वायर माइनस 3i बाई 2, और आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है. तो किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का भी जरूरत पड़ेगा. एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको ईच एलिमेंट का कोफैक्टर्स का जरूरत पड़ता है. तो सबसे पहले ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, फिर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और एडजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोफैक्टर्स को लिखिए और कोफैक्टर्स को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हमको इनवर्स एडजॉइंट का वैल्यू आ जाता है. और एडजॉइंट के वैल्यू को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको इन्वर्स का वैल्यू आ जाता है, मतलब किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का, जो आपके सामने किए. और उसके बाद जब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी करना होगा सेम टाइम, मैट्रिक्स से दिया हुआ है तो उसका प्रोडक्ट करना होगा. इट मीन्स दैट ए स्क्वायर. तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है, तो ए स्क्वायर जो है आपका डिफाइंड होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम निकाले भी हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. एलिमेंट इस तरह से है 2 1 1 है, 1 2
1 है, 1 1 2 है। फिर 3 आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोगों को पता होता है, उसको ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस 3 आई फाइंड आउट किए, और बाई 2 है तो बाई 2 कर दिए, तो देखे वो इन्वर्स ऑफ ए के बराबर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन के व्याख्या को समझने में कोई दिक्कत है तो लाइव चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। लाइव चैट बॉक्स में आप लिखिए।